Okay, so this is a doubly reinforced section. So basically in doubly reinforced section, we already know that the steel is provided in the tension zone also and also in the compression zone. And when, under what circumstances do we provide doubly reinforced section? If anyone remembers, can anyone tell me under what circumstances do we go for a doubly reinforced section? I think this we have already discussed in When size of beam is restricted. when the size of the beam or the depth of the beam is restricted, correct? And anything else apart from When this? acting moment is more than the moment carrying capacity of beam. Exactly. So when the acting moment is more than the capacity of a singly reinforced balance section, then When size of beam restricted due to architectural treatment. architectural. So that means the same. The first point someone said, when the size is restricted due to any reason like architectural reason. ठीक है, and anything apart from this, दो ही point किए थे क्या हमने? ठीक है, in continuous beams also we go for a doubly reinforced when there is a reversal of bending moment, when there is impact load. So these were some of the other points which we have already done. So now let us go through the doubly reinforced section in limit state method. So you can see the figure. So I hope it is visible. Yes, so this is the tension reinforcement, this is the compression reinforcement, this is the width of the beam, this is the effective depth. So now this is the strain diagram. We know that the maximum strain is in the outermost fiber is 0.0035 in compression, and tension it is 0.87 Fy upon Es plus 0.002. This is the depth of the neutral axis. So now, since the compression reinforcement is also included here, so here we will see that one more force will act, that is cu2. cu1 तो पहले से ही था, we have already seen cu1. The distance from the top compression fiber is 0.42 xu, which we have already derived also. And then this is nothing but d minus lever arm is d minus 0.42 xu. This cu2 will act at this level where there is steel. Can you see, I have just drawn a line. So this, from the top level at the center of the bar, this is nothing but your cu2. So this will act at the center of the compression reinforcement, and the distance is nothing but d dash. So d dash you already know, that is the effective cover from the top reinforcement. So इसका lever arm क्या हो जाएगा, d minus d dash. I hope it is visible. cu2, the lever arm of cu2 force will be d minus d dash. So this is the only change as far as your stress strain diagram is concerned. So now let us see what are the various components. So in this, one thing will be added. So in the strain diagram, this is nothing but the strain at the level of compression steel, and in the stress diagram, this is the stress at the level of the compression steel, FSC. So this, and strain at this level and stress at this level is the two extra terms which we are going to see. So now let us see what are the various terms involved. So Cu1 is nothing but the compressive force of the concrete, and Cu2 is nothing but the compressive force of reinforcement in the compression zone, and D dash is the effective cover of the compression zone, and FSC is the stress in steel in the compression zone, and this is strain in steel in the compression zone. I hope this much is clear to everyone. So now let us move ahead. So now let us see how to find out this FSC. We know that stress is nothing but strain into modulus of elasticity. So now from the strain diagram, yes, is anyone talking? Please mute yourself, others. So now if you see, okay, so this is the strain diagram. So from strain diagram, by similarity of triangles, so if you see this triangle 0.0035 upon xu, now strain at this level upon, this is nothing but xu minus d dash, this distance. Are you getting this? How did this come?
and then strain we find out will be this, and then afterwards what is fs is nothing but strain into es. So strain we have got this value, so strain, just put the value of strain in this equation, fs is equal to strain into es. So now we will get this. So if you just calculate this, so you will get fsc is equal to 700 into 1 minus d dash upon xu. So this is something which you will have to remember, the equation for FSC. So in these problems, we also have to find out the value of FSC and then solve the problem. So I hope this equation, how it is arrived, how we have derived it, it is clear now. Next, let us see the value of FSC. So value of FSC should not be more than 0.87 Fy in case of Fe250. So when the grade of steel is Fe250, the value of FSC should not be more than this 0.87 Fy. And in case of Fe415 जरा and एक मिनट Fe, ऊपर का पेज बताओ ना, स्क्रीनशॉट लेने का। sorry, first page. ऊपर वाला पेज बताओ ना। हाँ Yes. So हाँ I'll give time at the end, don't worry. So when we are discussing, हाँ okay, ठीक है, so now हाँ सर। value of FSC should not be more than 0.87 Fy in case of Fe250, ठीक है, और Fe415 और 500 में it should not be more than these values जो टेबल में मैंने दिया है. I'll just zoom it, ठीक है, I hope now it is visible. So these, the value of FSC should not be more than these values in case of Fe415 and Fe500. So this depends upon what? It depends upon the ratio of D dash by D. So you know what is D dash, you also know what is D. ठीक है, effective cover in the compression zone, and this is the effective depth of the section. So D dash by D का ratio when you will find out, जो भी ratio है, suppose it is 0.075. So in that case for Fe415 the permissible stress will be 354. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये परमिसिबल स्ट्रेसेस है एफएससी के. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो नाउ मूविंग ऑन, what is MR of a balanced section in case of a doubly reinforced section? So now we will see that. So this is the MR of a balanced section. So this is the stress diagram, CU1, CU2. This we have already seen. So now let us first calculate the value of FSC. ठीक है, जब भी balance section, when we are dealing with the balance section, so first we will find out the value of FSC. We know the equation, it is nothing but 700 into 1 minus d dash upon xu. But when you are considering a balanced section, so in that case you will have to take xu max. ठीक है, now value of FSC calculated above should not be more than the permissible value. ठीक है, again this FSC जो calculate किया है, तो ये टेबल के जो वैल्यूज है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, एम आर ऑफ अ बैलेंस सेक्शन. नाउ वी विल फाइंड आउट एम आर. सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ एफ एस सी कैसे फाइंड आउट करना है. नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड सेक्शन इन अ डबली रीइंफोर्स्ड. ठीक है, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस्ड वन, नॉट द अंडर इन. So MR is given by Cu1 into lever arm plus Cu2 into lever arm. तो Cu1 we already know it is 0.36 FCK B into XU max. XU max क्यों लिया है? क्योंकि we are talking about the balanced one. And lever arm is D minus 0.42 XU max. और second force का क्या है? It is simple. Stress into area. FSC stress है वो level पे, और area क्या है steel का? ASC. Into lever arm is nothing but D minus D dash. ठीक है, second term कैसे आया? Everyone understood? Very simple it is. FSC into ASC into D minus D dash. Okay. So now for Fe250 MR क्या है for a balanced. ठीक है, तो if you solve this for Fe250 XU max का value अगर तुमने put किया, okay, so then you will get this. So I have written the direct value, so only we are concerned with only this formula. So MR of a balanced section for a singly reinforced section क्या था? सिर्फ इतना था, 0.148 FCK BD square if you remember. ठीक है, अब इसमें एक सेकंड टर्म ऐड हो गया है विच इज नथिंग बट एफ एस सी इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी डैश. सो देर इज नथिंग मोर डिफरेंट इन दिस. द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज ये सेकंड टर्म, और वो सबके लिए सेम है. ठीक है, फॉर एफ ई 415 वी ऑलरेडी नो कि 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर है, तो बस ये एक ऐड करना है, एफ एस सी इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी डैश. Again for Fe500 we already know MR is 0.133 FCK BD square.
फॉर अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन, और इसमें सेकंड टर्म ऐड करना है प्लस एफ एस सी इंटू ए सी इंटू डी माइनस डी डैश. इज दिस क्लियर एवरीवन? सिंपल. Yes, am I audible? You can reply. इतना क्लियर है सबको? एम आर ऑफ अ डबली रीइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन तक? Yes, sir. Yes, I can't hear anyone. Just reply. Okay. Yes, sir. Okay, fine. So now let us move ahead. Now we will see MR of an under reinforced section. ठीक है, तो MR of an under reinforced section के लिए first we will find out what calculation of XU. ठीक है, XU कैसे find out करेंगे? CU equal to TU. Same way we have done for singly. So CU is nothing but CU1 plus CU2. ठीक है, CU1 is this, CU2 is this. So in this, FSC is what? FSC is nothing but 700 into 1 minus d dash upon XU. So in this case, what we will do? First, we will find out FSC. ठीक है, before calculating the neutral axis, we will first find out XU, FSC, and then we will find out CU. So if XU is less than XU max, it will be an under reinforced section, and then we will calculate FSC. ठीक है, उसके बाद we will calculate FSC and we will check with the permissible one, and then MR is given by CU1 into lever arm 1 plus CU2 into lever arm 2. ठीक है, अगर XU is greater than XU max, then MR we will calculate considering it as a balance section. और अगर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं and then it is an over reinforced, then we will redesign. Yes, is this clear? Just make a note of this. जो equations है, just make a note of this. So with this, actually we have just finished the theory part of doubly reinforced section. So now we can actually start with the numericals. So in this, if you have any doubt, you can ask me, and take down this equations so that we can start with the numericals. सर स्टार्ट से बताओ ना. Okay. Do you want me to zoom or is this fine? ठीक है, थोड़ा zoom out करता हूँ. Let me, so that you can get the entire page. ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखना, एफ एस इज नथिंग बट 700 इंटू 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू, and then after that permissible we will select from this table, we will check, and then MR. ठीक है, ये वाला नोट डाउन कर लो. MR ऑफ अ बैलेंस सेक्शन फॉर ऑल द थ्री केसेस, जो फॉर एफ ई टू फिफ्टी, एफ ई सर फोर वन ऊपर एक फाइव. मिनट रुको ना, एफएससी वाला वो देखना था. यस, कम अगेन. हेलो. एफएससी का डेरिवेशन देखना था. FSC का. So you have joined late or what? This. नहीं सर, आप बहुत फास्ट चले गए थे. Okay, so am I going fast? So in that case you can just tell me. ठीक है. Yes, everyone, can we start with the numerical now?
or you are making a note of this? सर वो जो डी डैश वाला टेबल था वो आईएस कोड में है क्या? That is actually from the design tables. ठीक है, जो डिजाइन टेबल में है उसमें है वो, तो उसका वैल्यू तुमको दिया रहेगा, डोंट वरी. पेज नीचे रोल करो ना. Yes, now I think we should start with the numerical now. So please take down the first question. मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लिखा अभी तक. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का नहीं लिखे, लिखो फटाफट, और फिर और देन आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, so this is actually a very big module of LSM. So in this we have flexure also, we have shear also, and then we have torsion also. So we have started only with flexure now. In flexure again we have singly reinforced rectangular beam, doubly reinforced rectangular beam, and then we have T beams also. ठीक है, तो फ्लेक्चर काफ़ी बड़ा है, फिर उसके बाद shear है, उसके बाद torsion है. So this module is very big, so we have to be a bit quick now. सर इस मॉड्यूल्स में से कितने मार्क का पूछता है एग्जाम में? सर ये अपने इस मॉड्यूल में से अपने कितने मार्क्स का पूछता है एग्जाम में? ये मॉड्यूल में से हाँ ये सर. मॉड्यूल में से तुमको आइदर सिंगली और डबली में से एक क्वेश्चन है, टी में से एक क्वेश्चन, शेयर एंड टॉर्शन में से एक क्वेश्चन. तो जितने भी टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही. तो एक क्वेश्चन सर अपने कितने मार्क का होता होगा? एक क्वेश्चन 10 12. 9 to 10 मार्क, 8 to 9 मार्क, ऐसा वेरी ओके कर सकता है. ओके ओके, थैंक यू सर. आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन पेपर शो किया था. अच्छा, अब अपना हो गया सर, तो हो सकता है उस टाइम पे मैं एब्सेंट रहूँगा. ओके, मे बी. ठीक है, तो बेसिकली एक क्वेश्चन तुम्हारा एलएसएम पे, डिज़ाइन पे, और एक क्वेश्चन शेयर, और एक टी बीम का क्वेश्चन. एंड देन उसके बाद वी हैव स्लैब, डिज़ाइन ऑफ स्लैब, एक स्लैब का प्रॉब्लम, डिज़ाइन ऑफ कॉलम में एक कॉलम, और डिज़ाइन ऑफ फुटिंग में एक फुटिंग. Yes, these equations are done now. Done, sir.
Okay. So now take down the question everyone. ठीक है, लास्ट में फिर ये एम आर का इक्वेशन लिख लो, Cu1 इंटू लीवर आर्म प्लस Cu2 इंटू लीवर आर्म. So now take down the first question. A reinforced concrete member 300 by 600 mm overall. A reinforced concrete member 300 by 600 mm overall is reinforced with 3 bars of 25 diameter on the tension side and 2 bars of 20 diameter on the compression side. सर एक बार रिपीट करना, बहुत फास्ट जा रहे. I'll repeat again. A reinforced concrete member 300 by 600 mm overall 300 by 600 mm overall is reinforced with 3 bars of 25 diameter on the tension side, 3 bars of 25 diameter on the tension side and 2 bars of 20 diameter on the compression side. And 2 bars of 20 diameter on the compression side. Effective cover is equal to 40 mm. Effective cover is equal to 40 mm. Calculate the MR and safe UDL the beam can carry. Effective cover is 40 mm. Calculate the MR and safe UDL the beam can carry. Span is equal to 6 meters. Span is equal to 6 meters. Use M25 and FE500. Use M25 and FE500. That is the question. Okay, so I hope everyone has noted down the question. So now you can start with the solution. Okay, I'll just say the steps. So first you will find out FSC. Okay, first you will find out FSC and then you will check with FSC permissible. After that you will find out the neutral axis XU and then you will find out XU max on the basis of the type of the section, that is under enforced, over enforced. Then you will find out the MR. After finding out the MR, by equating MR with the load on the beam, you will get the UDL and then you will get the safe UDL. Is that fine? So first step, find out FSC
ठीक है, तो सबसे पहले एफएससी फाइंड आउट करो। एफएससी का इक्वेशन क्या है? बाय पुटिंग एक्सयू मैक्स इन दैट। ठीक है, तो सबसे पहले एफएससी फाइंड आउट करो दिस बाय पुटिंग एक्सयू मैक्स। ठीक है, एंड देन गिव मी द वैल्यू। ठीक है, ये जो एक्सयू है, बाय पुटिंग एक्सयू मैक्स एफएससी का वैल्यू फाइंड आउट करो, you will get some value, and then after that find out the value of FSC by using the table, by using d dash upon d। ठीक है, d dash upon d से FSC का वैल्यू निकालो। ठीक है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड के FSC का वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन गिवन इन द टेबल। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वैल्यू तुम्हारा, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू तुम्हारा ये टेबल से ज़्यादा आया, देन यू विल कंसिडर द परमिसिबल वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। मतलब ये परमिसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों से तुमको चेक करना है। पहले एफ एच सी बाय यूजिंग एक्सयू मैक्स यू विल चेक, you will find out, and then FSC you will find out by using this ratio. So basically we are trying to check whichever is the least, we will consider that। ठीक है, and then find out XU by putting the least value। जो भी FSC का least value रहेगा वो XU के इक्वेशन में पुट करके CU इक्वल टू TU, you will find out XU, फिर XU max से कंपेयर करेंगे, then we'll find out MR। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस। ये फर्स्ट वाला वैल्यू बताओ। ठीक है, वी डोंट हैव मच टाइम, आई थिंक 5 मिनट्स ही है। सो क्विकली मुझे ये वाला वैल्यू बताओ फर्स्ट, और डी डैश से जो मिल रहा है वो वाला एफएससी का वैल्यू बताओ। सर वो डी डैश से निकालने के लिए इंटरपोलेट करेंगे क्या? यस यस, इंटरपोलेट करना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट नहीं है वैल्यू तो इंटरपोलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो कितना आ रहा है बाय द वे? 598.55। फर्स्ट वैल्यू यू आर गिविंग मी दिस, Yes sir, हाउ मच? कम अगेन। 5 98.55। okay, 598। ओजस इज गेटिंग, एनीवन एल्स? करेक्ट है? 591.3। 578.26। 578। वाई इट इज वेरिंग? एक्सयू मैक्स बताओ फिर मुझे, एक्सयू मैक्स कितना आ रहा है? 230 mm। 230। ओके, अदर्स ऑल्सो गेटिंग 230 एक्सयू मैक्स। एक्सयू मैक्स का इक्वेशन क्या है? सर 0.46 डी आएगा ना। व्हाट इज एक्सयू मैक्स फॉर FE 500? 276। 0.46 D। Correct. So what is the value of XU max? 57.6। Yes, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 257.6। 257। Someone is saying 230। सर आपने ओवरऑल डेप्थ दी इक्वेशन में, तो इफेक्टिव कवर माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड से। Exactly correct। तो ये जो अगर इफेक्टिव कवर माइनस नहीं कर रहे तो आ रहा है वहाँ। तो इफेक्टिव कवर जब भी दिया है तो माइनस करके ही निकालना पड़ेगा ना। इफेक्टिव कवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओवरऑल डेप्थ इज गिवन, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा? 600 माइनस 40। 600 माइनस 40 कितना हो गया इफेक्टिव डेप्थ? 560।
Now give me the value of XU max. 591.30 आ रहा है फिर FSC. ठीक है, पहले मुझे XU हाँ सर, max मेरा कंफर्म कर रॉन्ग दो. मेरा रॉन्ग है, सही है। Sir, ऑडियंस का सही है। 257.6. ठीक है, so XU max is 257. महफूज is saying 276. 590. 276 कैसे आया महफूज? ठीक है, और you can write in the chat box. Still FSC का फाइनल वैल्यू क्या है? $598, $591. Others, is that correct? $591. Okay. Rida is saying Yes, sir. 591. 591.3. ठीक है, now FHC with the help of this D dash by D कितना आ रहा है? ठीक है, I hope this is correct. 591.3. Because I don't have the answer, so you have to give me the answer.